Good morning, students and learners. In the previous class, we were discussing about the device isolation techniques, and we discussed about the all four techniques, about your oxide isolation, junction isolation, local oxidation, and finally this trench isolation. We discussed about this process, and we were discussing about the advantages that this trench isolation gives. So as I told you, there is no bird's beak problem in this. So it does not require much space, so it consumes basically less space, and it provides isolation between P and N channel devices to prevent latch up in CMOS circuit. So latch up is basically a very leakage type problem in your CMOS circuits, where your parasite BJT can be formed in it, and unknowingly due to this since it is a parasitic, so it may get turned on. So that problem is there. This problem is known as basically your latch up problem. So it improves your packaging density since it requires less space, obviously, and it can be used to form storage capacitors in your very high density DRAM applications. So in the diagram beside, you can see A, B and C. These are three different profiles of your trench profiles. One is in V shape, another one is in U shape, and the third one is a slightly undercut type shape. So this diagram I have taken from book VLSI Fabrication Principles of Silicon and Gallium Arsenide by S.K. Gandhi. You can go through that book and you can find this diagram and the related material there. Moving on to the next is your planarization. So what is basically a planarization? Okay, so isolation techniques are completed. So this is a different topic, planarization. Planarization is a process of achieving a flat profile on the wafer surface. And since most deposition process produces a surface, it produces a surface with a finite roughness, which usually increases and with increased deposition and thickness. So the starting material for a micro circuit is, it should be ideally flat. However, the process of circuit fabrication, which includes the growth or deposition of both the insulating and the conducting material, results in non-planar structures. As you can see here in the diagram beside, non-planar structures as the wafer proceeds towards your metallization stage. So metallization stages are basically 3 or 4 stages. So it has to be a really flat, so there are like problems associated with non-planarized structures. If it is not very flat, so what should be the probable problems? So it basically breaks the continuity of the fine lines. ठीक है, तो अगर जैसे कुछ वेरी फाइन लाइन स्ट्रक्चर हम लोग को ग्रो कराना है, कोई पैटर्न प्रिंटिंग करनी है वेरी फाइन स्ट्रक्चर की, तो एज यू कैन सी इन दिस प्लेनराइज्ड आईसी एक डोम टाइप का बना हुआ है, इट इज़ नॉट फ्लैट. अब डोम टाइप के ऊपर हमने कोई और स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना है तो इट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट, और उसका स्टेबिलिटी इश्यूज़ भी आएंगे. ठीक है, रिलायबिलिटी नहीं रहेगी उसकी. तो इस वजह से प्लेनराइजेशन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. एंड सो बेसिकली देर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लेनराइजेशन. वन इज़ लोकल प्लेनराइजेशन के सपोज़ इस एरिया की अगर मैं बात करूँ, सपोज़ दिस पर्टिकुलर एरिया, यहाँ पे प्लेनराइजेशन अगर मुझे करना है, सो लोकल प्लेनराइजेशन इज़ थर्मल ऑक्साइड लगा के या सम अदर वे, अगर ओनली वन पार्ट पे मुझे करना है, देन दिस इज़ नोन एज योर लोकल प्लेनराइजेशन. And local planarization, it is basically consists of the smoothening steps in topology which occurs over a very short distance. ठीक है, so this can be done. Otherwise the other one is your global planarization. इसके अंदर क्या है, we are doing chemical mechanical polishing, CMP process. जैसे हम लोग ने लोकोस process में भी CMP is one of the step in that, in trench isolation, sorry. So this is what planarization is basically and why it is very important. Basically हम लोग को बहुत फ्लैट सरफेस चाहिए जिसके कारण उसके हम ऊपर कोई और स्ट्रक्चर जो है वो इजीली ग्रो करा सकें,
कोई भी लाइन की कंटिन्यूटी आ रही है, बहुत छोटी लाइन है, वो ब्रेक ना हो जाए बीच में, क्योंकि अगर कोई लाइन ब्रेक हो गई तो ऑब्वियसली उसके अंदर लीकेज का प्रॉब्लम आ जाएगा, है ना. तो इस वजह से प्लेनराइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी आर डिस्कसिंग केमिकल मैकेनिकल पॉलिशिंग, CMP. तो इसमें क्या कर रहे हैं हम कि इट इज़ अ ग्लोबल प्लानराइजेशन टेक्निक एंड इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्मूथनिंग सरफेस विद द कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल एंड मैकेनिकल फोर्सेस. तो ऊपर से हम लोग केमिकल सॉर्ट ऑफ स्लरी कोई भी केमिकल है वो हम लोग डाल रहे हैं, और नीचे से विद अ प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर वी आर अप्लाइंग, एंड देन दिस रोटेशन थिंग इज़ हैपनिंग, है ना. So it can be thought as of a hybrid of chemical etching and free abrasive polishing. Basically polishing process hai. You can see here the slurry is there. You can see this polishing slurry is there. This pad is there, and it is rotating here. This is also rotating, and this is upside down process, means wafer को हम लोग उल्टा रख रहे हैं, and then this process is happening. So chemical mechanical polishing, so in planarization the wafer is mounted on a rotating platen, on a rotating platen. इसको हम लोग रख रहे हैं like in the previous step you have seen. And then let me introduce you with this diagram. So this diagram has been taken from NPTEL lecture, and the lecture, it is from the course Electronic Materials, Devices and Fabrication. You can go through this. The articles are readily available on the internet about this subject, and you can find it here. So basically in planarization, the wafer is mounted on a rotating platen, and it is then polished using polishing pad and a slurry containing abrasive materials. Abrasive materials is quite जैसे वी कैन सी दिस इज़ वेरी सिमिलर टू, जैसे घर में जब हम लोग नए मार्बल लगाते हैं तो उस नए मार्बल की हम लोग पॉलिशिंग करते हैं, राइट. तो उसके अंदर कुछ स्लरी मटेरियल डालते हैं, इट थोड़ा सा खुरदुरा रहता है, जिसके कारण से वेरी ऊपर कोई अनसिमेट्री है तो वो एकदम स्मूथ हो जाए, एकदम फ्लैटन हो जाए. तो सिमिलरली इसी तरह का जो प्रोसेस है, दिस इज़ केमिकल मैकेनिकल पॉलिशिंग ऑल्सो. So the polishing pad and the platen rotates in the opposite direction, and the slurry carries away the small particle. This removal is the mechanical polishing part. Okay. Then the slurry material is chosen such that it can also dissolve or etch the surface material away. ठीक है, वो उसको भी remove कर दे. This constitutes the chemical removal part, and hence the technique is known as CMP, chemical mechanical polishing. Typically, the polishing pad is made up of polyurethra foam, while the slurry depends on the material to be removed. So, for metals, usually alumina is used, while etchants like your potassium hydroxide, KOH, ammonium hydroxide, NH4OH are used for silicon oxide polishing. So, after CMP, there is a post-cleaning step which involves the cleaning the wafer with deionized water एंड नाइट्रोजन ब्लो ड्राइंग. सो इट विल रिमूव एनी एक्सेस स्लरी पार्टिकल, कुछ और अगर उस पर बच गया है वेफर सरफेस पे तो वो रिमूव हो जाएगा. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये ग्लोबल प्रोसेस है, तो ठीक है, पूरे वेफर पे ये प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे. ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर पार्ट में हम नहीं अप्लाई कर रहे, पूरे एक वेफर को अपसाइड डाउन करके उस पर स्लरी लगाएंगे, उसको रोटेट करेंगे, उसके अंदर से केमिकल्स, वो एब्रेसिव पार्टिकल होगा जिसके कारण से उसको और स्मूथ बना देगा, फ्लैटन बना देगा. सो दिस टाइप ऑफ टेक्निक इज़ परफॉर्म्ड ग्लोबल प्लेनराइजेशन. ओके, सो इसकी वजह से वेरी फ्लैट सरफेस, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, very planarized IC we will get. Okay, so this is for today. Thank you.